Second, first substance hydrochloric acid functions most important. Second is the mucus. Mucus का काम होता है, म्यूकस का फंक्शन है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड, यानी कि स्टमक की जो इनर लाइनिंग है उसको एसिड के इफेक्ट से बचाना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द म्यूकस। नेक्स्ट आगे बात आती है पेप्सिन। पेप्सिन कब बनता है? पेप्सिनोजन से, और पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स एंड कन्वर्ट इनटू द पेप्टोन्स। Enzyme is pepsin. This is the chemical digestion. Two steps completely, ingestion and digestion is being carried on. After the stomach, food enters in the small intestine through the duodenum. Through this small intestine, two digestive glands are associated. First is liver and second is the pancreas. Pancreas is the mixed gland and liver is the largest gland in our body, and liver secretes the bile juice. This is the duodenum, entry gate, first part of small intestine. Liver is the largest gland. Liver is the digestive gland. Liver secretes bile which is temporarily stored in the gallbladder. Liver बनता bile juice बनता लिवर में, लेकिन स्टोर गॉल ब्लैडर में रहता है। गॉल ब्लैडर जिस पित्त की थैली बोलते हैं। जो बाइल जूस है उसका फंक्शन है, बाइल जूस प्रोवाइड्स एल्कलाइन मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। पैनक्रियास से जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं उनके लिए एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है क्या? बाइल जूस। अगर बाइल जूस सीक्रेट नहीं होगा तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट नहीं करेंगे। सेकेंड फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट कंटेन्स बाइल सॉल्ट। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं दैट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब है जो फैट्स की लार्ज ड्रॉप्स को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो। अब यहाँ केमिकल डाइजेशन होता है, ये एंजाइम्स है ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, केमिकल डाइजेशन ब्रेक डाउन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट वर्क करता है। इस बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एंजाइम लिखे हुए आए थे और ये लिखना था कि वो किस न्यूट्रिएंट्स पे वर्क कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो इंटेस्टिनल जूस एंजाइम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करते हैं और इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करने का केमिकल डाइजेस्ट करते हैं। अब बात आती है आगे एब्जॉर्प्शन। थर्ड पार्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच food is mixed in the blood vessels in the small intestine. In the wall of the small intestine, some finger-like projections are found, which increase the surface area for the absorption of the digested food.
From after a small intestine, food enters in the large intestine. In the large intestine, water and minerals are absorbed, and undigested food and big pieces of food are eliminated through the large intestine. That means egestion. This is the last step of hologic nutrition, that means egestion. And this is removed through the anus. अब बात करते हैं समरी की, कहाँ कितना डाइजेशन होता है। इस स्टार्च का 3 to 5% डाइजेशन माउथ में होता है, 97 to 95% स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सलाइवरी एमाइलेज, ये सलाइवा में होता है, एंड देन सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट होता है। ये स्टार्च का डाइजेशन 3 to 5% डाइजेशन कन्वर्ट करता है माल्टोज में, माल्टोज स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, तब एब्जॉर्ब होगा। स्टार्च सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट 3 to 5% डाइजेस्ट होगा सलाइवरी एमाइलेज से, कन्वर्ट होगा माल्टोज में, माल्टोज पर एक्ट करेगा इंटेस्टिनल जूस और कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। So with this is completed nutrition in human beings. From this chapter, the most important questions are functions of bile juice, functions of hydrochloric acid, most important. And from this sometimes question comes in the form of enzymes are given, and you have to note, you have to mention the nutrient on which they act. And from this topic is completed in the next. So with this, nutrition life process is completed. Thank you.